Well, thank you so much, Vineet. I've got Pradeep here with me, the man who top scored in the innings with 39, but 82 on the board. Do you think a little hard done here, the Bulldozers, with that score? The pitch is nipping a little bit, and bowling in a channel will be difficult for them also. So I think we are just 10 to 12 runs short. 10 to 12 short. You'd probably be bowling the first over as well. But did those 3 runouts really hurt your side today? No, not really, because the first 7 overs weren't initially good. We couldn't score big, and the power play was also not big. So we had to go for it. We had to convert the ones into twos. So we had to take chances. So runouts are bound to happen. That. Now 83 to defend. Go well with that, with the ball. Well, that's the way it is. Pradeep hoping that they can defend 83. Back to the commentary box. Let's take a look at the highlights. The Karnataka Bulldozers starting off on a good note. Pradeep with some spunky batting over there. And not too many wickets fell in the first 6 overs, but after that the scoring got a little slow, and of course the wickets also fell equally fast. Well, the bowling did their job in the beginning, coming up with a few amazing deliveries right in the block hole, but the batting somewhat crumpled after the fall of the first wicket, and that was Pradeep. When he went back to the pavilion, there was a lull to that storm, which actually made the Karnataka Bulldozers come back on the back foot and score only 82 runs. A couple of boundaries and a couple of welcome sixes were also seen today, and that was one of them. But wickets could have been saved had cleverness prevailed, but that was not to be. And the Kerala strikers made the most in the last few overs. Some thoughtless strokes, and some people walked back into the pavilion who could have been instrumental in taking this team to a 3-digit total. But nevertheless, it was a good game, it was a good innings. The Kerala strikers are going to pad up and come back and try and achieve the target of 83 runs. All right, 83 is the target, and the Kerala strikers are padding up to come back and give a good reply to the Karnataka Bulldozers. Let's go across to my man. Time now, ladies and gentlemen, for the Carbon Kamal catch. I've got Sunil here with me. I've got 3 contenders waiting to catch this cricket ball. Sunil's going to be firing it away. Let's see who's going to catch it, because whoever does wins that Carbon mobile. Are you going to share it with me, any of you? Are you going to share your phones with me? Well, I wonder if they will be sharing that mobile with you. They've got to catch the cricket ball first, Sunil. Are you ready to go? All right, here goes the first one. And that's taken. Not bad. We've got 1 contender. Another one. Let's see if someone else can catch that as well. There are 2 more still to go. Well, that's just a little bit of movement, but he's taken it by the scruff of his fingernails. They're really earning their phones, man. Yeah, they're running their phones. The last one to go here, Sunil. And here goes. And that's as easy as pocketing a Rasgulla. Thank you so much, Sunil, for doing the honors. Ladies and gentlemen, that's what we had for you in the Carbon Kamal catch. Thanks a lot, Raman. Well, it's time for us to take a break, but when we come back, the Kerala strikers are going to come back with their reply and a target of 83 runs. We'll be right back. Back to Hyderabad once again. So Kerala strikers, both the openers out there, Alexander, along with him it's going to be Rajiv opening the innings for the Kerala strikers. 83 is the target. Going to be Pradeep to start the proceedings with the ball. First ball just outside the line of Ostam, wide the call for the umpire. Zerring in his line. Just a couple of steps and then coming in very quickly, Pradeep. So going to be a very interesting run chase. Just thought that Kerala strikers in the last few overs did a very good job with the ball. This time the flow of runs picked up a few wickets as well. Not chasing much, just need to bat sensibly. All depends on how Bulldozers bowl. CCL T10 blast powered by Bharti Cement. The second match in progress. And that's a much better length as well from the bowler Pradeep. A very useful all-rounder. Need a good start up front just to ease the pressure.
A lot of fielders inside the circle. 3 overs of power play. Once again, just erring in his line. थोड़ी नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी. ज्यादा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या गति के लिए जाएंगे, फिर अपनी दिशा से आप भटक सकते हैं. बात कर रहा था, थोड़ी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं. बहुत जरूरी है कि ये शुरू में थोड़ा दबाव आप डालें, सही जगह पे गेंदबाजी करें. और वही शायद जो बाकी फील्डर्स हैं उनके पास आ रहे हैं, समझा रहे हैं यहाँ पे प्रदीप को कि एक लाइन पे करिए, विकेट टू विकेट. काफी बातचीत चलती है. गेंदबाज को अगर कोई गलती करे तो समझाने के लिए आ रहे हैं. और अब अपना एंगल बदलते हुए राउंड द विकेट आ रहे हैं. इस बार बल्ला लगा, ऐसा लगा कि बल्ला लगा है. देखना होगा एम्पायर की क्या सोच है. जी हाँ, बल्ला लगा बिल्कुल. अंदरूनी किनारा, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे. और खाता खोला अलेक्जेंडर ने उस सिंगल के साथ. कमेंटेटर बॉक्स में अजय मेहरा मेरे साथ है एक बार फिर. रमन मनोहर, स्वागत है. धन्यवाद अजय. सबसे बड़ी बात ये थी कि बॉल लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी, और क्योंकि लेग स्टंप के बाहर पिच करी थी तो उसके बाद बैट लगे या ना लगे कोई चांस ही नहीं है लेग बिफोर देने का. केरला ब्लास्टर्स के सपोर्टर्स तो मौजूद. अठहत्तर रन 58 गेंदों में. दिलचस्प बात ये थी अजय, बात कर रहा था मैं प्रदीप से, इस केरला स्ट्राइकर्स की चेज शुरू होने से पहले, और वो ये कह रहे थे रन तो हमने बना लिया 39 पर, बॉल थोड़ा सा जिप कर सकता है तो मैं पहला ओवर डालूंगा, उम्मीद है विकेट निकाल दूं. जी हाँ बिल्कुल. और मुझे लगता है कि जब आपके पास इतने रन ना हो, बहुत जरूरी है कि अच्छी सदी शुरुआत हो. कुछ सुंदर चेहरे, कुछ सुंदर स्ट्रोक्स भी आज देखे हैं. और यहाँ पे जो दर्शकों की तादाद है, एकदम शोर सा आ रहा है जैसे आपने ज्यादा क्या देखा है अजय? देखिए, यादा तो मैं आपके साथ ही रहा हूं, पर नीचे जाने का मौका मिल नहीं रहा. पर जरूर जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे. और ग्राउंड का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो भी बहुत बढ़िया इस वक्त. ये अच्छी गेंद, और एंगल बदलने से क्रैम्प कर रहे हैं राजीव को, बड़े स्ट्रोक्स लगाने से रोकते हुए. ये है खेमा केरला स्ट्राइकर्स का. एक मजबूत बैटिंग क्रम है इनके पास, पर एक चुनौती है कि एक अच्छी टीम के विरुद्ध वो खेल रहे हैं. कर्नाटका बुलडोजर जो 2 बार खिताब जीत चुकी है अभी तक सीसीएल में. अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका. ओ बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया. ज्यादा मूवमेंट नहीं, पर जो एंगल है उससे ही चकमा खा गए. खेल सारा इस एंगल का बनता हुआ. प्रदीप राउंड द विकेट. सीम अपराइट नहीं पकड़ के गेंदबाजी कर रहे. कई बार देखा आज न सिर्फ केरला की टीम के खिलाफ, आज कर्नाटका के खिलाड़ियों से. बहुत जल्दी दौड़ लिए और डायरेक्ट हेड वापस जाना होता. चूक है वहां पे, संघर्ष कर रहे थे. रन नहीं आ रहे हैं. कुछ वाइड से रन जरूर आए हैं, पर बल्ले से रन नहीं आए. सोच यही थी कि स्ट्राइक रोटेट की जाए, डायरेक्ट हिट वापस जाना होता. संघर्ष कर रहे थे. अलेक्जेंडर अब स्ट्राइक पे हैं. और अच्छी चीज है कि कई बार हमने देखा कि आप रनर के साथ आते हैं, यहाँ पे रनर नहीं आया, कोई खुद आए हैं. और बहुत बढ़िया गेंद, उछाल मिलती हुई, 6 बिना किसी नुकसान के. पहले ओवर में 6 रन. लक्ष्य याद रखिए केवल 83 रनों का है, ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर डाले नहीं.
आज कर्नाटका बुलडोजर्स ने केरला स्ट्राइकर्स के लिए बैट्समैन के बल्ले से रन कम पहले ओवर में, एक्स्ट्रास की कंट्रीब्यूशन ज्यादा. Normally, I've seen Karnataka Bulldozers are very good on the field. They are a very committed unit.